Yes, guys. Now you can see the split screen now. Okay. So let's make a folder file by the name loops and link that to our JS loops.js. Okay. Or okay. So your loops.js, I've linked it. Now I come to the loops.js. Now let's start with the first loop. The first is the traditional loop. Okay, the traditional for loop which we have. So if I have a array of numbers, and if these are the numbers, okay, I'll increase the size for your visibility. Now I guess it's visible. And if I have these numbers, now I want to find the sum of these numbers. How will we do it? Traditional for loop, right? So for let I equals to 0, I less than numbers 1 dot length and I plus. And we need a variable to find the sum. So can I take const sum or let sum? Why not const? Because it will be always incremented, no? It will change. So let sum equals to 0, and what will we do over here now? Sum plus equal to numbers of, why it doesn't plus equal to work in JavaScript? Sum 1, okay? The sum है. सही है. हाँ? Numbers 1. सही है. And then control S. You got the answer as 150. This was which loop? Traditional. So this we are aware of, traditional loop. Okay. So we call it as a classical for loop. What do we call this as? The classical for loop. Now let's come on. Now we have for off. What we have? For off भी है, for in भी है, for each भी है, for off भी है और for in भी है. तो for off जो है आपका जावा का for each. जावा का for each क्या था? कोलन वाला. एक एक एलिमेंट कोलन के राइट में से कोलन के लेफ्ट वाले वेरिएबल में आता है ना. तो वो जो फॉर ईच जावा का है वो जावा स्क्रिप्ट का क्या है? फॉर ऑफ. तो यही अगर मुझे करना होता फॉर ऑफ से तो क्या करता मैं? फॉर, ठीक है. तो लेट, अभी जो वेरिएबल आपका कोलन के लेफ्ट साइड में है तो लेट से फॉर एन ऑफ वेयर नंबर. तो एन में क्या आ गया फर्स्ट इटरेशन में? हाँ, 10 आ गया ना. अभी क्या करना है अपने को? सम में किसका ऐड करना पड़ेगा फिर? तो फिर मुझे यहाँ पर एक नया सम देना पड़ेगा. लेट सम 1 इक्वल्स टू, बिकॉज वो तो सम आगे बढ़ गया है ना. या तो फिर एक कोड कमेंट करो, ठीक है. या तो एक कोड कमेंट करना पड़ता है, फिर मैं नया सम ले लिया. क्या करूँ अभी? सम 1 प्लस इक्वल टू, ठीक है. अगर मैं एरे नया ले लूँ ताकि आउटपुट मालूम पड़ जाए कि डिफरेंट आया है, तो नंबर्स 2 करना पड़ेगा. अगर मुझे ये सेम एरे से खेलना होता तो क्या करना पड़ता मुझे? यहाँ वैर करता. क्या करता मैं? वैर. बिकॉज नाउ वैर कैन बी
री डिक्लेयर्ड ऑल्सो, वेयर कैन बी, अगर मैं नंबर 1 से वेयर करूँ तो वापस उसी स्कोप में वापस रिडिक्लेयर हो सकता है। अब यहाँ पर मैं 11 कर दूँ तो अब क्या होगा, बोलो भाई। और अगर कंसोल डॉट लॉग करूँ सम वन, व्हाट विल बी द आंसर, 151 आ गया। तो ये कौन सा फॉर ऑफ क्या है, फॉर ईच, जो जावा का फॉर ईच है वो जावा का फॉर ऑफ है, ठीक है। तो फॉर इन क्या है, ठीक है, इनके ऊपर मैं इनके एग्जाम्पल के साथ लिखते जाता हूँ क्या कर रहे हैं, ताकि तुम लोग को जब डॉक्यूमेंट शेयर करूँ तो पहला क्या बोलेंगे हम, क्लासिकल फॉर लूप, ये हो गया। दूसरा क्या बोलेंगे इसको अभी, फॉर ऑफ लूप। और अभी तीसरा फॉर इन। फॉर इन जो है, फॉर ऑफ चलता है कलेक्शन पे, ग्रुप ऑफ डेटा पे, फॉर इन चलता है ऑब्जेक्ट पे चलता है। तो फॉर ऑफ इज फॉर अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ डेटा, जैसे एरे हो गया। और ये क्या चलता है फॉर इन, किस पे, ट्रेवर्स एंड ऑब्जेक्ट। मैं डिफरेंस को दिखाता हूँ, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, राइट। तो एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब ये प्लेयर ऑब्जेक्ट हो गया, करेक्ट। अब मुझे इस प्लेयर ऑब्जेक्ट के सारे डिटेल्स दिखाने हैं, पी नंबर क्या है, पी नेम क्या है, रन कोड क्या है, मैचेस प्लेट क्या है। तो एक तरीका क्या है, अब डायरेक्ट लॉक कर दो ऑब्जेक्ट को, डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट को लॉक कर दो, तो आपको वो ऑब्जेक्ट का आ जाएगा, पर वो सारा एक साथ आएगा। मुझे अगर दिखाना है इंडिविजुअली, ठीक है, अलग अलग लाइन पे दिखाना है, तो क्या करूंगा मैं, लगा दूंगा फॉर इन लूप। कौन सी लूप, फॉर इन। अब फॉर इन कैसा होता है, की वैल्यू पेयर है ना, ये ऑब्जेक्ट में क्या है, की वैल्यू पेयर है, तो उसका सिंटैक्स देखिए, ठीक है। हमें क्लासिकल समझ में आ गया, वो तो पहले समझ में आ गया। फॉर ऑफ को अपन ने फॉर ईच से रिलेट कर दिया, वो भी समझ में आ गया। फॉर ईच को थोड़ा होल्ड करो, फॉर इन कर लेते हैं। तो ये अपना रोल नेम, रोल और लैंग्वेज है आपका। तो अभी क्या करते हैं, लेट, ठीक है, जितने उसके कीज है ना, कीज वो ट्रैवर्स हो गए, क्या होंगे, तो लेट की इन प्लेयर। तो फर्स्ट इटरेशन में क्या आ गया उसके, फर्स्ट इटरेशन में क्या आ गया, टी नंबर आ गया, क्या आ गया। तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ स्टेलॉक की करूं तो क्या आएगा आंसर, सारे कीज, करेक्ट, आ गए। और फिर अगर आपको उनके वैल्यूज भी प्रिंट करना है तो फिर आप क्या कर सकते हो, ये ऐसा। अब अगर आपको बैक टिक यूज क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को करना है प्लेयर का क्या, ठीक है। तो देखते हैं काम करता है क्या, आ गया, की और प्लेयर का की है ना। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे फॉर इन से क्या हो रहा है, हम ऑब्जेक्ट को ट्रैवर्स कर सकते हैं और उसके एक एक की को फेच कर सकते हैं। और फिर आपको की दिखाना तो की दिखाओ, वैल्यू दिखाना तो वैल्यू भी दिखा।
ओके, गेटिंग इट। अगर आपको की वैल्यू दोनों भी दिखाना है तो कोलन के साथ, कि मुझे ऐसा दिखाना है, पी नंबर कोलन 18, पी नेम विराट। अब ये मैं खुद से फॉर्मेट कर रहा हूँ डेटा आउटपुट को, और जब हम खुद से फॉर्मेट करते हैं तो क्या यूज करते हैं? बैकटिक यूज करते हैं। तो बैकटिक क्या दे दिया? ओके, बैकटिक क्या करता है, जहां पर भी आपको सब्स्टिट्यूट करना है कोई वैल्यू तो क्या दोगे आप? डॉलर में। ये आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या दे दो? कोलन दे दो। और फिर इसको भी अपने को करना है सब्स्टिट्यूट। कंट्रोल एस करो, देखो कि आपका, ओके, ये एक एक करके आ रहा है ना। ठीक है, ये क्या था? फॉर इन। ठीक है। अब ये सारे लूप्स है, ये सारे क्या है? लूप। लूप होती है ब्रेक, फंक्शन होता है रिटर्न। लूप क्या होती है? ब्रेक। फंक्शन क्या होता है? रिटर्न। ठीक है। तो अब अगर मुझे ये इसमें, जब मेरा टोटल 100 हो जाए, मुझे आगे ऐड ही नहीं करना है, क्या करूंगा? ब्रेक कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं? इफ माई someone is equal is greater than or equal to 100, do what? कंट्रोल एस। देखो, ओके। तो अभी someone क्या हो गया पहले? देखो इधर दिख रहा है, जैसे ही 100 से ऊपर हुआ तो क्या कर दिया उसने? तो 50 को ऐड ही नहीं किया, ठीक है ना। तो लूप में क्या होता है? ब्रेक। और फंक्शन में क्या होता है? लूप से बाहर निकलना है तो ब्रेक, और फंक्शन से बाहर निकलना है तो रिटर्न। समझ में आ रहा है ना? फॉर ईच जो है इसमें, वो एक फंक्शन है। जावा में, जावा स्क्रिप्ट में फॉर ईच क्या है? लूप नहीं है, फॉर ईच क्या है? और फंक्शन यू कॉल यूजिंग एन ऑब्जेक्ट। फंक्शन यू कॉल यूजिंग एन ऑब्जेक्ट। तो अगर मुझे फॉर ईच करना है, जैसे कि मैंने ये कर दिया, ठीक है। ओके, सही है। यस और नो? अब मुझे इसको दिखाना है, आई ड्राइव ऑडी, आई ड्राइव बीएमडब्ल्यू, आई ड्राइव मर्सिडीज। तो एक तो फॉर ऑफ से भी होगा, क्या होगा? फॉर ऑफ से होगा ना, फॉर इन तो ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर ऑफ से होगा तो क्या होगा? फॉर लेट कार ऑफ कार्स। तो क्या करूंगा मैं? जहां पर भी वेरिएबल हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, आई ड्राइव ऑडी आने वाला है ना, तो बैक टिक इज द बेस्ट। तो बैक टिक इज द, आई ड्राइव क्या? डॉलर कार। आ गया, ठीक है। अब अगर मुझे बताना है जब बीएमडब्ल्यू आ जाए तो ब्रेक कर दो। क्या कर दो? ब्रेक कर दो। क्या करो? इस कार डॉट क्या है? इक्वल करते हैं हम, क्या नाम? बीएमडब्ल्यू। देन व्हाट टू डू? जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन मैंडेटरी नहीं है, तो उसने सिर्फ क्या किया? बीएमडब्ल्यू दिखाया, और उसके आगे मर्सिडीज दिखाया नहीं, क्योंकि लूप टूट गई। ठीक है ना। ये क्या था? फॉर ऑफ। फॉर ईच भी जो है ना, फॉर ईच वो भी यही काम करता है, बट वो एक मेथड है। वो क्या है? तो वो लगेगा
कार्स डॉट फॉर ईच, क्योंकि कार्स एक एरे है और एरे इंटरनली टाइप ऑफ क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये ऐसा लगता है। बात समझ में आ रही है? ओके, अब इसको कैसे करना है। अब इसमें आएगा एक एरो फंक्शन, क्या आएगा, एरो फंक्शन कैसा होता है, राउंड ब्रैकेट, एरो और कर्ली ब्रैकेट। अब एक एक जो आपका कार है वो इसमें आएगा, इस वेरिएबल में, तो यहाँ पर है पैरामीटराइज है। और आपको उसका करना क्या है वो आप यहाँ लिखोगे, करना क्या है उसका आप यहाँ लिखो। तब यहाँ पे यहाँ ड्राइव लिखा, आई ओन कर देता हूँ, आई ओन ऑडी, आई ओन बीएमडब्ल्यू, आई ओन मर्सिडीज। तो ये लूप क्या दिखाएगी, ड्राइव, ये लूप दिखाएगी क्या, आई ओन। ठीक है, ठीक है। और इसमें जो होता है ना वो होता है रिटर्न, क्या होता है फिर, रिटर्न फंक्शन है ना, वो फंक्शन क्या होता है, रिटर्न होता है। तो रिटर्न का काम जो है फॉर ईच में, वो कंटिन्यू वाला काम है। कौन सा काम है, इसका जो रिटर्न है वो कंटिन्यू वाला काम है। कौन सा काम है, कंटिन्यू वाला काम है। इसमें रिटर्न, रिटर्न बोले तो कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू लूप में इट skips दैट इटरेशन। व्हाट डज कंटिन्यू डू, इट skips। तो फॉर ईच में जब मैं करूंगा रिटर्न, मतलब वो इटरेशन स्किप कर दे। जैसे अब मुझे बीएमडब्ल्यू दिखाना नहीं, मेरे पास बीएमडब्ल्यू नहीं है, मेरे पास बीएमडब्ल्यू नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा उसको कि इफ कार कौन सी हो जाए, बीएमडब्ल्यू हो जाए, तो मैं बोल दूंगा रिटर्न कर दे, क्या कर दे, मतलब क्या, हाँ, स्किप कर दे। तो अभी आउटपुट क्या आएगा, पहले आएगा ऑडी, तो ऑडी इक्वल इक्वल टू बीएमडब्ल्यू, क्या, इफ फॉल्स हो गया तो क्या करेगा, आई ऑन ऑडी। फिर नेक्स्ट बीएमडब्ल्यू आ गया, कार इक्वल इक्वल बीएमडब्ल्यू, क्या, तो रिटर्न मतलब कंटिन्यू। तो लूप टूटेगी नहीं, कंटिन्यू हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या लेगा वो, मर्सिडीज। तो आउटपुट क्या आएगा इसका, तो ये ड्राइव था, ये ऑन था, ओके ऑन ही है ना अभी, अभी भी ऑन ही है, तो क्या आएगा, आई ड्राइव में तीनों आएंगे। ओके, आई ड्राइव में भी टूट रहा है, तो आई ड्राइव में मर्सिडीज नहीं आ रहा है, बट आई ओन में क्या क्या आएगा अभी, हाँ, आई ओन ऑडियो, आई ओन मर्सिडीज, करेक्ट। देखो आया। तो फॉर ईच क्या है, एक फंक्शन है। तो अगर डिफरेंस पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉर ऑफ एंड फॉर इन, तो बोल सकते हैं फॉर ऑफ और द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट कलेक्शन, एंड फॉर इन फॉर अ ऑब्जेक्ट ट्रैवर्स ऑन द कीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर, क्या बोलते हैं, फॉर ऑफ एंड फॉर ईच, बोला तो फॉर ऑफ एक लूप है, उसको ब्रेक करना पड़ता है कंडीशन के ऊपर, और फॉर ईच एक मेथड है, उसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट लगता है, उस मेथड पे कॉल होगा वो। और ज्यादा करके ये एरेज का ही मेथड है। किसका मेथड है ये, एरेज का मेथड है। अगर हम उसमें जो जावा स्क्रिप्ट में और भी टाइप के कलेक्शन है, पर उनपे कभी कभी फॉर ईच काम नहीं करता है, कभी कभी, या कभी कभी ब्राउजर टू ब्राउजर भी वेरी होता है कि इस ब्राउजर पे ये फॉर ईच काम नहीं कर रहा। तो समझ में आ गया डिफरेंस तुम लोग को। और रिटर्न मतलब क्या, हाँ, स्किप करता है, ब्रेक नहीं, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन की टेंडेंसी क्या है कि वो रिटर्न मतलब फंक्शन से बाहर आ जाता है ना, इसमें क्या होगा, वो कंटिन्यू वाला काम करेगा। ठीक है, ओके। देयर आर टू स्टाइल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, which are there, imperative and declarative. In imperative the focus is on how to do, and in declarative the focus is on what. So if, let's take example of making a tea, okay, make a cup of tea. So if I have to ask someone to make a cup of tea, and if I have to show him the imperative way of making tea, I will do like this. Take all the steps, I will say. Take water, put on gas, blah blah blah. All the steps I will show. Till, but if it, in declaration I will just say what? Please bring me a cup of tea. That's. I will not tell the detailed steps.
In both the results, end result is tea is served. Yes, tea is served. But in imperative style, I have to give all the steps myself. In declarative style, it is all done behind the scenes. I just have to say what you want. Make sense? Let's take example. If I have an array and I want to store the double of that array. So if I have an array and I want to store its double into another array, and let's try to do it by the imperative style. So I will take a second array or doubled array, declare it as an empty array because there's nothing as of now in it. Correct? Then run a for loop. Let's say you're running for off. So what will you do? So now what is in n? What is in n? 10, right? So let number double the number. Number equals to what? And multiply by 2. So now what is in double number? 20. And then do what? Doubled array dot push. What? Double the number. Correct? And loop completes. And then you console.log what? Double the array. Make sense? Let's try to do it practically over here. So let double array is empty. Let n as array. Let double array this. Control S. Let's check for the output. और declare नहीं किया? Okay. ये ले कहाँ से रहा है? Let ARR equals to 10, 20, 30. आ गया? Array of 3 साइज क्या है? वैल्यूज क्या है? 20, 40, 60 और मेरा ओरिजिनल एरे का क्या था? ठीक है, तो ये मेरा ओरिजिनल ओरिजिनल एरे है ARR और ये मेरा डबल एरे है. सही है. अब मैं एक एक स्टेप बताया. अब ये क्या स्टाइल था? इम्पेरेटिव स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग. इससे अच्छा क्या है? डेक्लेरेटिव. तो डेक्लेरेटिव में ये एडवांस लूपिंग टेक्निक्स आते हैं. ठीक है. सो लेट मी टेक वन मोर एरे ARR 1. I'll take it. Now we can use the map method. Which method you use? Map. Map method will return you an array equal to the size of the array on which the map is applied. If I have a array, this array which I have right now. So what is the array size? Array size 3. Okay. And correct? Yes or no? So map will always give you an array of the same size on which the map is applied. What is the array name? ARR. So when I do ARR dot map, map is a method. For each is a method. Map is a method. So when I apply map method on an array object, what will it return me?
It will return me a new array, correct? What will be the size of that array? I'm saying only size, okay? I'm not saying content. I'm saying what? What will be the size of the new array? Guaranteed the size of the yes, yes. Guaranteed that the size of this array what guaranteed that the size of that array also will be what happened? I just pressed Control N over. Oh. So what will be the size of that new array? The size of the new array will be the same as the size of the array on which map was applied. So map was applied on the array of size 3. New array will also be of size 3. This is the very important thing you have to understand when you are doing math. Okay, and what you want to do then that you can do over here is work same as for each. You all got the logic of for each. So now I'm applying map on which array? Applying app. So what will be the LHS? New array will be of size, guaranteed of size 3. Now what you want to do over there? So arrow function. What you want to do over there? Arrow function. One element will come in where? N. And what you want to do? To what? N multiplied by 2. Come inside console.log what? New array. Okay. Let's change the values. 11, 22, 33. Control S. Got it? So this is what more declarative style of program. Now we can even break this down further. Okay. I'll try to break this down further. Make it even more smaller. I've copied this, commented this out. How many lines does the function body have? Huh? One. If the function body has one line, no need to give curly bracket. You can give round bracket. You can give what? And when you give round bracket, it is understood that it has only one line. So no need to give return also. You don't need to give what? And let's see if this works or not. Okay. Let's again change the size numbers. 12, 24, 36. I save, changed. Yes or no? And if it contains only one single line, no need to give this bracket also. So I'll copy that and no need to give the bracket also. Even this will work. Even this will Control S works. So now this becomes one simple line of code. This is called as imperative style of programming. Got it? Yes, no. So what is this returning? What is this returning? New array. So you can store that new array over here. Okay. This is called which function? Map. What filter does is filter will not return a array of the same size. Filter will return the array of the matching condition. Of the matching condition. So if I have a array over here and I have the elements, let's say I have the elements 1, 2, 3, 4, 5. What elements do I have?
Which elements do I have? 1, 2. Now I want to store only the odd numbers in an array. Which numbers? Odd numbers. So does this array have 5 odd numbers? Yes or no? Then the resultant array which will be made will have how many elements? Which are there? One. So is the size of the original array and the resultant array same? This is filter. This is filter. It will only return those elements which satisfy the condition. Getting it? So let's try to do that. So let ARR3 equals to 1, 2, 3, 4, 5. And now filter also is a method. So let filtered or let odd numbers array equal to what? ARR3 dot filter. Function come inside arrow function. One more element will come where? In M. And then if you are giving curly bracket, you have to return. If you are giving curly bracket, you have to return, write return. Round bracket, no need to write return. So return what? And mod by 2 gives me what? Return only those where n mod with 2 will give you. And what is happening? Semicolon expected. So semicolon is not. Yes? Yeah? Okay. हाँ arrow function में सही है. So what will it return? Only this, only those elements which satisfy this condition, and that will come where? In the where? Odd numbers. Okay, that will come in the odd numbers array. Makes sense? Let's come and check. Only 1, 3, 5 have. Getting it? Yes, no, maybe. So if I want that these elements be doubled, and then after double, whatever number I get, I want only the odd numbers. Then first we will do map, and then filter. So that is called function chaining. That is called as function chaining. So we can do that also. So let ARR4 equals to 10, 11. Okay. And in array, in JavaScript, the array is heterogeneous, right? Now what to do? Double them, and then filter out the odd element. How to double now? First, okay. So let result array equals to first do what? On ARR4 do what? Do a map, correct? So what will we do in map? One more element will come where in this, and what will we return? What will you return? N into 2. So what will be the answer in result array? Yes, 11, 20, 21, 22, 40, 43. Then what to do? Result array dot filter. So arrow function. Each element will come in n, and what will you return? N mod by 2, which gives me 1. Correct? And what is this answer?
final result. Correct? So if I sys out final result, what will be the output? Yes, 21, 22, 40, 43. The answer will be 21 and 43. 21 and 40. Correct? So I could have done it even more faster by doing function chaining. How? Okay, how I could have done it even more faster by using function chaining like this. Okay, this is my array 5. So I could have done like this. ARR 5 dot map. Okay, and then return what? The element will come in which variable? And return what? And multiply by 2. Correct? So this will return me an array with multiply by 2. Then I will show dot filter over here only. And what will dot filter do? All the elements will come again in n, and we will return what? What will you return? Those elements which fulfill this condition. Okay, so now if I say 11.5, now what will be the answer? And this 22.5, 23 and 45? Yes or no? And what is that is coming in which variable? An array. Let ARR6, correct? So if I C log ARR6, then answer will be 2340. Making sense? And now we can make it even more faster. Now you all know, as they are containing all single lines of code, right? So we can make it even faster. So instead of writing so lengthy, we can make it faster by saying that ARR7 equals to, this is returning only one single line, right? So no need to write anything, just write n into 2, correct? And that comes up over here. And this same for filter, no need to return, no bracket, nothing doing. So let's come here. So this is which style of programming? Yes, guys, faster, right? So got to keep this in mind while programming. Yeah. Yeah, right. Once more, 2345. And then what reduce does? It reduces to a single value. Map, 5 elements, 5, filter, 5 elements, 3, reduce, 5 elements, 1. It reduces them into one single value. So if I have an array and I want to find the sum of that array, sum of array is a single value. Yes or no? So if I have an array 10, 20, 30. So what will we do? Let sum equals to ARR 8 dot reduce, and n will come in n, and arrow, and what will we do? So with this n, we will get the accumulator also. What will we get? In which you want to put the sum. So what will we do? We will do n plus the accumulator. What are we doing? So this is that accumulator variable, and it will return that answer. So let's see log sum, and let's see if we can get 6. Yes, no, maybe. Getting it, guys? अरे समझ में आ रहा है, तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है? Accumulator. ऐसा है. तो ये सारे के सारे ट्राई करो आप.
मैप रिड्यूस फंक्शन। फाइंड क्या करता है? फाइंड जो पहला एलिमेंट सेटिस्फाई करे वो रिटर्न कर देगा। क्या करेगा फाइंड? जो पहला एलिमेंट सेटिस्फाई करे। फिल्टर क्या कर रहा है? जो हर एलिमेंट सेटिस्फाई करे वो। और फाइंड क्या करेगा? जो पहला सेटिस्फाई कर दे उसको दे देगा। ठीक है, तो अगर मुझे बताना है कि ये एरे में से ऑड एलिमेंट्स कौन से हैं, तो क्या आएगा? 21, 41, 45। तो ये क्या यूज करूंगा मैं? फिल्टर। और अगर मैं फाइंड यूज करूँ तो क्या आएगा आंसर? एक देगा। क्या देगा वो? एक ही देगा। तो लेट्स ट्राई टू चेक दिस। एरे 9। ओके, that answer equals to ARR 9 dot what मेथड है वो। एक एक एलिमेंट किसमें आएगा? एंड क्या करेंगे हम लोग? एन mod with 2 is equal to, so does this satisfy? Does this satisfy? Yes. 21 doesn't satisfy this condition, तो ये रिटर्न कर देगा। तो अभी आंसर में क्या आएगा आपने? हाँ, बोलो भाई। क्या आ रहा है? जो फर्स्ट एलिमेंट सेटिस्फाई कर दे वो रिटर्न कर देगा। तो क्या बोलते हैं? फाइंड। मैप, फिल्टर, रिड्यूस, फाइंड। कोई प्रॉब्लम? कोई शक नहीं है? क्लैरिटी एकदम? हाँ, आवाज